Hello, lovely people. So when you are a gardener, you have to deal with such stuff daily. Like you have to assemble your pots, especially if you are a rooftop gardener. तो आपको इन चीज़ों से रोजमर्रा की बुनियादों पर डील करना पड़ता है कि आपको अपने पॉट्स हिलाने जुलाने पड़ते हैं ताकि उनके नीचे मिट्टी नहीं जमा हो जाए, कीड़े ना जमा हो जाए। और मेरी मम्मा को तो इन चीज़ों से डर बहुत ज़्यादा लगता है और उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है कि यार क्या तुमने फैला के रखे हुए गंदे मंदे से करके। तो ऑलमोस्ट ये काम डेली ही करना पड़ता है। सो लेट्स आई थॉट के आई शुड मेक अ वीडियो टुडे ऑन क्लीनिंग, लाइक हमने इनको कैसे डील करते हैं हम गार्डनर्स। लुक, इट्स सो difficult. If you have any ideas to do it easily, please let me know in comment section. It's such a beautiful flower. Oh my god, look at, there's a flying bee inside. So yeah, I never have flowers like seasonal flowers to मैं रखती थी, but now I have some other evergreen flowers. Look at this, such a beautiful flowers. Like, you know what, daisy, white daisy basically is my favorite flower, used to be my favorite flower, but मैंने इस दफा ये येलो एंड ब्लैक एंड प्योर येलो डेजीज मंगवाए. दीज आर क्यूट. और गेंदा तो लाइक जहां भी आप जाएंगे वहां पे आपको मिलेगा ही मिलेगा सीजनल फ्लावर्स में. और इसके अलावा ये सन फ्लावर्स जो होते हैं ये भी ऑब्वियसली होते हैं यूजुअली. उसके बाद हम करेंगे जी सफाई का शुरू और हम झाड़ू लगाएंगे जल्दी जल्दी से ताकि हम मिट्टी भी निकाल दें. उसकी जो मिट्टी जम जाती है ना वो भी मुझे बहुत बुरी लगती है, मेरी मम्मा को भी बहुत बुरी लगती है. तो उससे हमें डेली बेसिस पे डील करना पड़ता है, मुझे डेली बेसिस पे सफाई करनी पड़ती है. सो नाउ लेट मी टेल यू हाउ आई डू इट ऑन डेली बेसिस. So once we are done cleaning, like doing झाड़ू, we have to report all of these. So मैं पहले सोच रही थी कि हम इसको किसी नए स्टाइल में रखें, लेकिन सर्दी बहुत थी और रिकॉर्डिंग मेरा भाई कर रहा था. एंड यू नो ब्रदर्स आर सच अ बिग ड्रामा. तो फिर उसको था कि नहीं जल्दी जल्दी रखो, मेरे हाथ जम गया, फलाना और फलाना और फलाना और ऐसा और वैसा. आई कैन नॉट कीप रिकॉर्डिंग. तो आई थॉट लेट्स पुट इट बैक जल्दी से ताकि वीडियो खत्म हो और इससे मेरी जान छूटे. यू नो व्हेन यू डिपेंड ऑन समवन अदर इट्स लाइक they make your job really hard. I would have done it like in alone 5 minutes, but with him काम लंबा भी हुआ और बेसुरा भी. I just सो येप इट्स द फाइनल लुक. मैंने उसी बेसुरे तरीके से रख दिए, पीछे बड़े गमले आगे छोटे गमले. और मेरे पास बहुत ही थोड़े गमले में हिसाब लगाए थे. इवन व्हेन यू काउंट देम दे आर ऑलमोस्ट मेक हंड्रेड्स ऑफ देम. लाइक दूसरी साइड पे भी हैं, दूसरी तीसरी साइड पे भी हैं, कॉर्नर्स पे भी हैं और ये वाले भी हैं. लेकिन लाइक दे आर सो लाइक लिटिल, तो छोटे छोटे से तो थोड़े लगते हैं. तो आई थिंक आई शुड buy bigger pots now and make them look more beautiful. Don't you think so? Okay, bye.